हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड और तुम्हारी क्लैट की तैयारी अच्छी चल रही है. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट जीके एंड करंट अफेयर्स इज गिविंग यू अ हार्ड टाइम बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट वास्ट सेक्शन टू बी कवर्ड इन द क्लैट सिलेबस. बट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सिर्फ 3 महीने बचे हैं क्लैट के पेपर के लिए, सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन फॉर योर क्लैट पेपर. उतना टाइम ही नहीं है. सो व्हाट आई हैव डन इज बच्चों, रिसेंटली आई टुक दिस फ्री लाइव वेबिनार फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, व्हिच बाय द वे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट. इस फ्री वेबिनार में मैंने बताया था दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and what can you do to prepare for your current affairs in GK in the next upcoming 3 months, and this can give you a score of 90% above in the GK and current affairs section. And I promise you, अगर आप इसको properly follow करोगे and इसी तरीके से पढ़ाई करके जाओगे, you will be able to bag at least 20 plus marks in your current affairs section. सो व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, इस वेबिनार को पूरा देखना है. अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का ये वीडियो होगा. इसको अच्छे से देखना. यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो. इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द स्लाइड्स दैट आई हैव यूज्ड, देन यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बाय द वे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने और एस्पिरेंट्स ने इस वेबिनार को लाइव अटेंड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप. इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी. अब upcoming from this particular week, I will be taking a live session every weekend. हर weekend में चाहे mock analysis का हो, most important topics का हो, current affairs की free marathon classes का हो, legal reasoning हो, बहुत सारे sessions एकदम free होंगे every single weekend now. Okay, so you can also join this WhatsApp group for many other free resources as well. Link description box में मिल जाएगा, right? सो एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, क्योंकि टाइम अब कम है, आप सारे टॉपिक्स को तो नहीं पढ़ सकते. करेक्ट, एग्जैक्टली यही बात इस वीडियो में भी मैं करने वाली हूँ. लेकिन आपको पढ़ना क्या है? सो व्हाट आई हैव डन बच्चों, आई हैव सैट विद माय टीम एंड वी प्रिपेयर्ड अ टॉपिक लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जनवरी टिल द डेट. और अब तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मंथ वाइज आपको मिल जाएंगे. कुछ इस तरीके की वो टॉपिक लिस्ट है, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होगे. सो उसको अगर आपको लेना है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा. एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल करना. आपको डायरेक्टली एक पीडीएफ मिल जाएगी आपके मेल पे, या फिर आपको एक पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा एंड यू विल हैव पीडीएफ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जनवरी टिल टुडे. आप वीडियो देखना शुरू करो और अच्छे से ध्यान से पेशेंस इसको देखना. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. I hope you're all doing fine. I know इतने ज़्यादा दिमाग खराब होगा. You must be all feeling very stuck with GK. I can understand, especially because बच्चों now only 3 months are left, 90 days are left. GK is not something that is everybody's cup of tea given the time is so less. Okay, I'm doing very well bachcho, and today's session I'm so excited because I have a really very practical strategy for you all. Okay, now listen to me very carefully bachcho. ठीक है? First, tell about the topic that I'm going to teach. Nancy, I'm not going to teach anything today. There is no theoretical class that is going to happen. I'm rather going to help you out with the strategy for the last 90 days, the last 3 months for your CLAT GK backlog. I'm specifically going to focus on the GK backlog in this very session. Now be very careful बच्चों. This class is not going to be any fancy class. बहुत ही कोई idealistic webinar नहीं है, because I really want it to be of help as much as possible to all of you. Now, in very beginning, I'm very saying that for all the questions that you have, you can ask your questions by the end of the session. Listen to me. There is a reason why backlog happened for all of you, because your concentration was not on point where it had to be in the months that have already passed. Am I correct or not? Now, I don't want that to be happening with all of you today when I'm going to tell you the strategy and you are still distracted and not able to focus on what I'm going to tell you all, okay? So let's let not that happen like with all of you, okay? So all the questions you can ask by the end of the session. I will be all there to take up your queries, okay? And Nancy, I'm exactly going to give you the important topics, okay? Now, how many participants do we have? 154 participants, including me right now. Remember one thing, bachcho, I promised you that I will be sharing the list of topics, the most important topics from January till August with all of you. And I will keep up that promise. But my only condition is I will only share these topics with the students who stick till the end of the webinar. I'm telling this very, very clearly, and it will not change whatsoever. So this I'll be able to give you only by the end of the webinar. So by the end, we will give you a form to fill out. Okay, you just have to log in. Okay, I will be actually, as a free giveaway, I will be sharing a demo dashboard of practice questions with all of you. Okay, you can simply go and register over there. आपको सिर्फ अपनी email ID, number और नाम डालना है. Once you put that, we will have a list of your email IDs and we will send over the most important topics. 400 से भी ज़्यादा topics हैं बच्चों. More than 400 topics are there in that list. I will be sharing with you through mail.
very clearly. First and the last time I'm telling, I'm not going to share it in the group. I'm not going to share it in the chat box. I will only share the link of registering by the end of the session. Only those who will stay by the end, because only you deserve those important topics, bachcho. Because if you cannot sit through 1 to 2 hours for this class, I am sorry, मैं आपको कितने भी topics दे दूं, you will not be able to complete the GK backlog any which way. So get this very straightly, okay? ठीक है? Now let's get started, everyone. We are going to talk about the last 3 months or the last 90 days GK backlog strategy. For all those who do not know me, I don't think so, because कहीं ना कहीं आपने मेरे बारे में सुना होगा, YouTube पे देखा होगा, only then you might have joined this WhatsApp group, because this webinar, by the way, बच्चों, is exclusive, live exclusive only for our WhatsApp group students. That is why I, ask people to join the group. Okay. So you all know I am the founder and CEO of We Learn Legal. ठीक है? I am also a faculty for legal reasoning. I also take current affairs classes with my students. I am myself a BLLB honors gold medalist of my batch. Long story short, okay, so yes, I graduated with a gold medal in my batch, and I'm really, really enthusiastic with teaching students just like you and helping them out as much as possible. Okay, now, time is very, very limited. I don't think I need to tell you that. You already know, and perhaps that is the reason why you have joined this webinar, and I'm very happy that you people have joined live. Okay, so the time is limited, bachcho. And what do we need to crack CLAT 2026? First of all, let's just pan out. Okay, एक बार दूर के व्यू से देखते हैं कि हमें CLAT के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए. सारे के सारे subjects, all the 5 subjects you need to cover, no matter what. And by the way, bachcho, I will be covering up with most important topic list for all the subjects, PYQ analysis for all the subjects. So just stay tuned. Okay, all the 5 subjects you need to do. You need to do regular mocks from now. You need to do regular mock analysis from now. You need to go ahead with the current affairs which are happening now, like today, tomorrow, and all the upcoming days that are there till your CLAT examination. Okay. Then speed reading. You have to increase your speed, वरना कितना भी आता हो बेटा, पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे. Revision, and 1 year GK prep. Now I've highlighted it because बच्चों सबसे ज्यादा gap यहीं पे है. Correct? 1 year GK prep from the previous CLAT till this CLAT, and I'm pretty sure a lot of you are, completely stuck कि अब हम GK backlog का करें क्या. But don't worry, in today's session I'm going to help you. Okay, so 1 whole year of GK and CA you need for CLAT 2026. Okay, but the reality check is, बच्चों, we have only 3 months now. और 3 months भी मैं तब बोल रही हूँ जब आप effectively, efficiently you are going to use every single day. Okay, and this means we have only 90 days left. सुनने में अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो please open your eyes, बच्चों. 90 days is a very less time, but you can do it. Okay, there is so much more that you need to do, which is left to be done in the 90 days. Mocks है, revision है, speeding, read है, concepts है, CR है, maths है. Everything now you have to fit in the next 90 days. Okay, and we cannot give all the 90 days to just GK backlog. ये बहुत ideal होता. Getting it would have been so ideal that 90 days are left and all I had to do now was covering the GK backlog. To be honest, बच्चों, तुम्हें सेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती तब. ठीक है, क्योंकि क्या है, 90 दिन में बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत टाइम होता है 90 days में. Okay, but unfortunately we cannot give all 90 days to just the GK backlog, right? We only have, face it everyone, okay, we only have 2 hours, 2 to 2.5 hours every day for GK backlog. That's it, not more than that. In fact, I'm covering your current GK also in this time only. Okay, thus what we are reading in these 2 hours will make the difference. अब आप इन 2 घंटों में टाइम पास कर रहे हो, फालतू की चीजें पढ़ रहे हो, या फिर आप बस आपको वो टॉपिक अच्छा लगता है आप इसलिए पढ़ रहे हो, और you're just because you like the topic you're reading it, or have you strategically found out that what really is important for CLAT, and I will give my primary focus on that. That will create the difference, bachcho. That what are you choosing to do in these 2 hours every single day? Now, if you are feeling left out, तो एक बार ना please listen to me very carefully and try to relate if these are the feelings that are going on in your heart and mind also right now. If you are also feeling left out, if you are feeling that you have forgotten everything, whatever you had read so far, if you are feeling that you don't have enough time, if you are feeling that the toppers are far, far away and ahead from you, if you are feeling that you cannot do it now, then this webinar, everyone, I promise to you, is just for you. Okay? Did you know
this is very interesting thing, that what is the memory span of an average human? Can anybody tell me in the chat box कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम कोई फैक्ट याद रखते हो, कोई एक चीज पढ़ते हो, तो तुम्हें कब तक वो चीज याद रहेगी? Like till what time, for how many hours or days or however will you be able to remember it? So 40 days is something, bachcho, which the time will take to completely erase off a memory out of you. Now, of course, I'm not talking about a memory of getting a medal or a certificate. Okay? This is a memory which you learn something. Okay? 40 days में it can get completely vanished. But do you know, bachcho, for a fact or some small information that we learn, the span is crazy. It is as less as just 24 hours. And I am not saying this by my own mind. Okay? Psychologists say this. मैं आपको ये reason से बता रही हूँ. Listen carefully to what I'm saying. Okay? An average human forgets a significant portion of new information learned shortly after learning it. About 50% of it you forget within an hour, and over 70% within 24 hours. And 90% आप भूल जाते हो, आगे जाते जाते you lose the information. And just see what this psychologist says. His name is Ebbinghaus. He says that within 24 hours, there is a huge great tendency that we forget all the facts that we have learned. I know it might be sounding very crazy to you right now. There are people who have better memory span, but मैं average पे ये बात कर रही हूँ. Okay? So just one thing, बच्चों. Even if you have not read anything so far, and a topper person, very intelligent person, had read everything and had not revised it till now, you both are almost on the same level right now. So this is a good news for all of you. That is why the real game starts now. Okay, this is a ray of hope which you have to focus on, that you still have time. And even though you had not read anything, you have less time, agreed, but you have very less time to forget it also. मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, when I was in college, I was never a student of this sort कि मैं बहुत पहले से चीजों को पढ़ती थी या फिर बहुत पहले से याद करना शुरू कर देती थी. Mostly जो factual information होती थी, like case laws, the year of case laws, names, sections, articles, mostly I used to learn them just a night before the exam. Okay? Of course, you cannot do this. ये ऐसा exam नहीं है ना कि आज इसका exam है, 2 दिन बाद दूसरा exam है. This is your one shot examination. I'm just telling you one thing. Okay? Now, because I used to learn the information only a few hours before the exam, my memory did not forget it till I took the examination. So it really worked in my favor because I had lesser time to forget. Yes, I had lesser time to learn and remember and revise, but I had lesser time to forget as well. So it worked in my favor. The only benefit I had, bachcho, that I can learn things very fast. Like even if I learn something in 5 minutes, I can remember it for months and years to come. Now that is maybe my tendency, but not everybody has a tendency. Maybe I have more other weaknesses. For example, I can get confused in something. I can get confused in sections, articles, something like that. But all I'm trying to tell you is that the real game has just started and you are just going to be there, okay? You can still beat the toppers. You can cover the whole backlog. You can surely get 25 plus score in GK, and you can make this weakling of yours, the GKCF, marathon, as your strong suit as well, and you can crack CLAT 2026. मैंने आपको ये सेशन स्टार्ट करने से पहले दुनिया भर का ज्ञान इसलिए दिया है because if your mindset is not right, no matter how much I do for you, even if I take live classes every single day, you will not be able to cover up your, whatever is the lacking thing, okay? Unless you really start believing that you can do it. And you can do it, okay? The only question is how. The only question is how. So what do we need to cover our GK backlog is these things, okay? Firstly, definitely write in limited resources. I'm going to help you with everything today, okay? Second is list of exact topics. See, now I am not leaving you all to go and hunt for these topics because I know अगर ये करने बैठ गए तो तुम एक महीना वैसे ही निकाल दोगे, ठीक है? I will be giving you the list of exact topics as I have promised. By the end of the session, you will have to register with your mail and you will get the topic list. More than 400 topics are there in that, okay? It is a free giveaway for today. By the way, bachcho, I will also be giving you a free practice question portal giveaway and some classes also as free, as a demo for all of you, okay? Thirdly, learning these resources, topics, and facts whichever you are going through. Fourthly, revising. This is truly the topper's secret, that कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता unless you revise. On the day of examination, जब कुछ याद ही नहीं आएगा ना, कोई फायदा नहीं है तुमने कितना भी पढ़ के गए हो, ठीक है? And fifth, practice beyond your imagination. 5 questions, 10 questions are not enough. You have to practice thousands of questions if you really want to make the difference starting today, okay? Now, one thing, bachcho, in today's session, I will be telling you about the GK batch. As I said, bachcho,
This session is not going to be a fancy session. I am not at all, I will say, skeptical, or I am not like, oh, should I tell about the batch to these students or not? I am very proud of the batch. Okay. I am very, very positive that it will help you a lot. And that is why by the end of the session, I will tell you about the GK batch, which is so affordable, and it is the elixir. It is the Amrit that you read right now. Okay. Because when I talk about the light and limited resources, we have magazines and classes to help you with that. When I talk about the list of exact topics, I'm going to share you till August, but upcoming also we share the topics, every time in the groups of also, and we share the topics on your portal also. Okay. Thirdly, learning these resources, we have live classes and quizzes for your revision. And when a teacher narrates something to you, बच्चों पढ़ना बहुत easy हो जाता है. You believe it or not. Okay. Revising, which we say is the topper secret. We are going to start marathon classes for monthly marathon, coverage also for your overall legal CA static. All of these things, we will have marathon classes and marathon quiz sessions also in the batch. And you, for the practice, remarkably, bachcho, you have 1500 plus monthly practice questions on the most important topics of the month. इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? Then in this, we're also, as I said, we are going to start special GK backlog classes, बच्चों. इसका primary focus ये होगा, and I'm telling you what you also have to do, okay? That we will take month by month, and these classes will be focusing on the GK backlog topics. So you will have classes going on for the current ongoing topics, but also for the GK backlog, topics. Okay. Then we will have, we already have, we are going through legal CA classes also already, and quizzes like practice questions also. And for static GK also, you have classes, notes, and MCQs. Moving apart, bachcho, I want you all to try something now. I hope कि CLAT की आप तैयारी कर रहे हो, तो you are very well versed with reading now, ठीक है? Next on this slide, I am going to put up a passage. There is a passage. It is about one very important news about the space technology. Okay. Just read it. I will give you 1.5 minutes. Okay. 1.5 minutes. It's not a very long passage to just read and try to remember the facts as much as possible. Your time, I will put up the timer. Just give me a moment now. Okay. This is your passage. Read it, everyone. I hope you're all reading it, but this is a very important exercise because I want you to learn something out of it. Okay. So it's 1 minute 30 seconds. And to be honest, मैंने आपको इतना time कम इसलिए दिया है. Exam में भी इससे ज़्यादा time you will not have to read the passage. Okay. And when you are now going to cover the backlog in the upcoming months, na बच्चों, if you're not reading with this speed, forget that you will cover your backlog. Okay. Forget about it. Okay. I'm sorry. You will not be able to cover the backlog. Okay. I don't know how much you were able to read, how much you were able to retain. Let's just do something. Let's change the pattern of understanding the topics and just do one more topic in this format. Can anybody tell me when was the first International Yoga Day observed? I'm asking about the first International Yoga Day. Okay? You can try the answers also. Okay? You can try writing in the chat also, or you can just see. Okay, let's see. So many AD, it's confusing. ठीक है, 2014 और 2015 में confusion हो रहा है. But बच्चों, let me tell you, the correct answer is D. It was 2015. Okay, so 21st June 2015 was the first yoga day it was celebrated. I'm not telling you anything. Just listen to what I'm saying. Okay. The first International Yoga Day was celebrated on 21st June 2015 following the UN's declaration in 2014. So UN did the declaration in 2014, but in totality, the International Yoga Day, first one was celebrated in 2015. Okay. This event saw massive participation with PM Modi leading a session at Rajpath, New Delhi. Okay. Now let's just move ahead. Let's just quickly I want you to see something. Okay. What is the 2015 theme for Yoga Day? 2025 theme for Yoga Day. Yoga for peace, yoga for one earth, one health, yoga for self and society, yoga for climate action. Quickly, answer. Let's see the answer, bachcho. The answer is B. Yes, yoga for one earth, one health is the correct answer. This is the theme, the link between personal wellness and planetary health as well. Okay. Question 3. Why is 21st June chosen for the International Yoga Day? Is it a summer solstice, PM Modi's birthday, full moon, or UN founding anniversary? What do you think? All right, bachcho, let's see the answer. It is indeed, yes, answer A, which is summer solstice. It is the longest day of the entire year. It is symbolically significant for unity and also for your spiritual awakening. Okay. Moving ahead, bachcho, last question. Which country co-sponsored the UN resolution? USA, China, 177 nations, including India, or only India? Quickly, I want to see the answer. वैसे मैंने बहुत easy topic pick किया है. मुझे थोड़ा tough choose करना चाहिए था. बट चलो, फॉर ऑल दोज हु कुछ ए भी कह रहे हैं, ओके फाइन, ठीक है, यूएसए, ओके, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं.
The correct answer indeed is बच्चों option C, which is 177 member states co-sponsored the 2014 International Yoga Day resolution. ठीक है? Now, all I want you to do is just move forward. Okay? अब हम कुछ और करने वाले हैं. We are now going to start with the actual strategy. इसको हम बाद में कुछ देखेंगे. Today, there is a reason I got you through with this exercise. By the end, we'll do something about it. Okay? Now let's break down the strategy that we have, bachcho. Step 1, everyone, choosing the resources. Every time I say, unless you have your arms and ammunitions, unless you have your weapons, you will not be able to fight the battle. Simple as that, okay? So when I talk about the resources, newspapers, अब I am saying only one editorial a day. पहले मैं हमेशा 2 से 3 editorial I used to say. Now just read only one editorial a day because you don't have a lot of time. I only want you to keep up with the reading practice and to keep up with the important topics that are ongoing currently. Okay. So go with any of the newspapers, take one editorial a day. Most important for your backlog, because today's focus is on backlog. Okay. It is the monthly magazine. Okay. Most important monthly magazines and even legal CA magazines as well. Basically, a compiled magazine will be there. Okay. Deepika, I'll be taking the questions by the end of the session. Okay. So for that, what you have to do, monthly magazines. Ab dekho, sari monthly magazines you will find in the link that is there available in your group description, whichever group you are a part of. You will find all the monthly magazine in the free study material folder. So you don't have to worry about that. Okay. Then daily one-liners which you're getting in the group, प्लीज डोंट रीड देम फॉर द बैकलॉग. मुझे कई बच्चे मैसेज करते हैं, मैम मुझे जनवरी से अब तक के वन लाइनर्स चाहिए. मैं मना कर देती हूँ कि बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगी, बिकॉज जस्ट गो विद द मैगजीन्स. यू विल गो क्रेजी इफ यू रीड वन लाइनर्स ऑफ सो मेनी बैक मंथ्स. ओके. डेली न्यूज एनालिसिस नॉट फॉर बैकलॉग. ठीक है. डेली स्टैटिक जीके ओनली फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, नॉट फॉर बैकलॉग अगेन. ओके. देन फॉर योर रिसोर्सेज बच्चों, एज आई हैव टोल्ड यू, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फॉर न्यूज़पेपर्स the most important thing is your awareness and that you get to know न्यूज में चल क्या रहा है. What are the important topics that are ongoing in the news? Okay, so selection of important topics you have to think which are important for the exams and you have to follow them up. That's it. Right now, this will be the only role of newspaper that you will take. ये मैंने पहले बताया है, like UCC, caste census, all of these things have happened and you cannot skip them if you're reading the newspapers religiously. Okay, you all know what is not the role of the newspapers. Notes वोट्स newspaper से अब बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई टाइम नहीं है. You will just be, wasting your time if you're making notes. You will get no time whatsoever to even revise them. So please don't make any notes and everything at this moment, okay? From newspapers, like you can write down things in your magazines, you can do some Google search, that makes sense, but don't make exclusive notes for every topic, okay? देन ये मैंने तुम्हें बताया है बच्चों, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, डेली लाइनर्स, ये तुम बाद में मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, तुम देख लेना. कुल मिला के बैकलॉग में इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है. एंड ओनली इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस यू विल गो विद दीज थिंग्स. ओके. देन बच्चों, मंथली मैगजीन्स का mark and study only one most important topics. Okay, so mark and study. What you're going to do is, when I'm going to share the list of important topics with you and with your own intelligence, you will be marking those topics in your monthly magazines. And sabse pehle, you will cover only those topics. Sabse pehle, because we don't have time. Bachcho, you try it if you want to. तुम try करके देख लो, ठीक है. तुम पढ़ ही नहीं पाओगे मंथली मैगजीन पूरी. अगर अब करने बैठे तो 1 मंथ की कर लोगे, 2 मंथ की कर लोगे, 3 की कर लोगे. 6-7 महीने हैं बच्चों जिसका हमें बैकलॉग कवर करना है, ठीक है. सिर्फ एक मैगजीन लो. If you want to go with the Wheeler and Legals magazine, you can go with it. If you want to go with any coachings magazine, go with it. If you want to go with Vision IAS, Drishti IAS magazine, I have no problem. Okay, I only get these magazines made for you people so that who cannot buy the magazines, who do not have accessibility to these big coachings and stuff, still you are not leaving, like missing out on the magazines. That's the only purpose. Okay, but if you're already reading or if you're already comfortable with any of the magazines that you have at hand, go ahead with it. I really don't get bothered कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो, बस कोई भी एक अच्छी सिंपल मैगजीन होनी चाहिए, ठीक है. देन फर्दर मूविंग बच्चों, you have to remember this thing, that how do we know which topics to choose? I know this is a question for all of you, right? So congratulations bachcho. Today I will be sharing a topic list, as I've already told, by the end, only with the students who will stay by the end, ठीक है. But what you have to do bachcho, you will have to analyze the PYQs. You cannot escape this. If you have not done it yet, please give 4 to 5 days and do this. Because unless you don't understand what kind of questions CLAT is asking, what is the depth of questions that they're asking, are they asking dates or facts, are they asking articles and sections, are they asking names or awards, are they asking years, or these things you have to understand, and only then you will understand bachcho if you have analyzed PYQs. Okay, so last 5 years के PYQs आपको analyze करने हैं. I am also coming up with PYQ analysis on my channel, like on my YouTube channel. That will be free. But बच्चों,
I'll be doing it one by one. Okay, तो it will be still better अगर तुम खुद से एक बार करने से बैठ जाओगे. ठीक है. So as I said, I will share the topic list today. More than 400 topics are there, including legal CA topics and including your monthly general current affairs topics. But as I said, do not shut down your mind. I'm very sorry बच्चों. I have really noticed that पता नहीं क्यों तुम लोगों को ना बहुत स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, which is I understand when we are very scared of something now we really want to be guided. I'm all there for you people बच्चों. ठीक है, but do not depend so much on somebody that your basic queries also you cannot solve on yourself. Okay, so do not just shut out your mind कि अगर मैम ने ये टॉपिक्स दिए मैं तो यही करूंगा, इसके अलावा अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं नहीं करके जाऊंगा क्योंकि मैम ने तो लिस्ट में नहीं डाला. सी बच्चों, this list has been curated by, like, I asked my GK faculty to put in effort. I asked Chat GPT to be honest कि भाई what is your analysis. I sat down through magazines and everything to put these topics, but still I'm sorry, I might miss a topic. देखो कभी मैं ये तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती गारंटी देके कि बस तुम ये टॉपिक्स कर जाओ 400 और तुम्हारा जो है क्लैट क्लियर हो जाएगा. I am telling you, yes, for sure, ये 70 to 80% of your syllabus will be covered. That I can give you a guarantee for. But exactly इसी में से questions आ जाएंगे, भाई मैं ये गारंटी नहीं दे सकती, तो उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा. ठीक है, एंड यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन योर ओन सर्च. बच्चों जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आपको खुद ही पता है ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते लगो ना, उसको स्टार्ट कर दो उसको पढ़ना. ठीक है, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मी टू टेल यू दैट इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक? यू डोंट नीड सच वैलिडेशन. Only once if you have gone through PYQs. अगर आपने मन से सोच रहे हो, then I can't really say anything about it. Okay. Now this is something the topic list will look like बच्चों. So जनवरी से अगस्त तक के टॉपिक्स हैं अभी. फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे 2025 के हाइलाइट्स थे, एरो इंडिया प्रोग्राम था, जम्मू बिकम्स 69th रेलवे डिवीजन इन इंडिया. ठीक है, जी मोर टनल इनॉग्रेशन हुआ है. ठीक है, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस फ्लैग बाय पीएम, महाकुंभ मेला वाज देयर, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन विशाखापट्टनम. दीज ऑल थिंग्स बच्चों. पद्मा अवार्ड्स सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, इवन फॉर योर एलेट पेपर ऑल्सो दीज आर इंपॉर्टेंट. ऐसी ही पूरी लिस्ट है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी. ठीक है, अब मंथली सीए मैगजीन्स की बात करते हैं बच्चों. आप उठा लेना मैगजीन जो मैं तुम्हारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में शेयर करती हूँ. ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. बाय द वे बच्चों, मंथली लीगल सीए की क्लासेस होती हैं, लाइव होती हैं जीके बैच में, जो मैं खुद पढ़ाती हूँ. ठीक है, एंड नेवर एवर मिस अ टॉपिक दैट यू सॉ इन बोथ द मैगजीन्स, योर लीगल सीए मैगजीन एंड योर नॉर्मल सीए मैगजीन. अगर दोनों में है, जैसे कास्ट सेंसस, देखो तुम ये देखो, यूसीसी है, कास्ट सेंसस है, एक्सियम 4 है, नेशनल इमरजेंसी है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज है. Very important. You cannot miss this. Okay. Now बच्चों, moving to step 2. समझ में आ रहा है ना बच्चों? I hope I'm not going very fast paced because I have a lot of things to cover for you all. Because मैं real strategy पे जब आऊंगी, I will sit, wait and be try to help you out. Okay. So I hope कि मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही, और फास्ट तो बेटा थोड़ा सा जाना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट टाइम बहुत कम है. ठीक है, सो चलो स्टेप 2 देखते हैं. स्टेप 2 हमारा क्या है? It is reading these resources. Now that is the main problem. Resource तो हम चुन लेते हैं, no problem about it. ठीक है, उसको पढ़ना कैसे है? ठीक है, so देखो बच्चों, for your backlog, choose your important topics. Now you have them. You will have them by the end of the session. ठीक है, divide them in daily targets. Don't worry. Today I'm going to help you with that also. ठीक है, I'll help you with that also. ठीक है, get a PDF of the magazines. अगर आप उन बच्चों में से नहीं हो that you can just read it through the laptop or your iPad or something, just get a PDF. कितने रुपए खर्च होंगे? ठीक है, just get a PDF of the magazines. Mark while you are reading with a pen or a pencil. ठीक है, read from the magazines, both general and legal CA. ठीक है, मार्क, अंडरलाइन एंड ऐड फैक्ट्स फ्रॉम गूगल. अगर तुम्हें लगता है मैं एक एडिशनल रिसर्च कर सकता हूँ, या क्लासेस से तुम्हें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, जस्ट नोट इट डाउन ओवर देयर. ठीक है, एंड मेक नोट्स only for those topics which you think are very important. upcoming अभी latest topics हैं या फिर पहले के topics हैं जिस पे तुम्हें deep research की बहुत ज्यादा जरूरत है. only for those topics. Okay, now how to divide the topics? Please give me your special attention on the screen now, because this is where your real journey starts. Okay, take the important topics list. बहुत अच्छा होगा अगर उसको print out कर दो. I am telling you बच्चों, कितना भी digital हो जाए दुनिया, whatever I want to read, I always have a hard copy of it. Always. Because when it's right on my desk, I can mark, I can turn the pages and see. It really works very well for my memory. So take a PDF printout of this particular, list that I'm going to share with you. Divide them in daily targets. I'm going to help you with that also. Now we have about 50 topics from each month so far. Approximately 50 topics हैं. किसी में 40 हैं, किसी में 60 भी हो सकते हैं. It's like that, but approx 50 topics हैं. Okay. Read 5 backlog topics daily. So daily के अगर आपका 2 से 2.5 घंटा है, right? So 5 topics you have to read from your backlog. Quick reading with practice. I'll tell you how to do it. Okay.
and read 3 topics from the CA or the current affairs that is ongoing right now. तो 8 से 10 topics आपको daily cover करने होंगे within the time span of 2 to 2.5 hours. Okay. Now let's see that what will be your month wise division. Okay. So अभी मैं ये assume कर रही हूँ बच्चों कि अभी you will just go with your PYQ analysis. You can start with your current daily affairs and everything. Even if you start from September, okay, first 10 days of September, September 1st से September 10th तक आप स्टार्ट करोगे अगस्त. एंड आई थिंक अगर तुम मुझे थोड़ा भी जानते हो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, लाइक आई होप आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू दैट व्हेन यू आर कवरिंग बैकलॉग, कवर फ्रॉम द नियरेस्ट मंथ फर्स्ट. August, then July, then June, then May. Don't start from January, please. Okay? The least questions come from the first 4 months of your year. The least questions. The most questions come from the nearest months of your CLAT exam. So you have to start in a reverse order. नोट कर लो इस बात को प्लीज. भावनाओं में बह के जनवरी से स्टार्ट मत करना. जनवरी पे सबसे कम अटेंशन जाएगा, फिर उससे ज्यादा फेब, फिर उससे ज्यादा मार्च, फिर उससे ज्यादा अप्रैल, ऐसे करना है. ठीक है. देन इन 10 डेज में अगस्त के आपको मंथली टॉपिक्स करने हैं. सी, इफ यू आर डूइंग 5 टॉपिक्स पर डे 10 डेज में यू विल हैव कंप्लीटेड 50 टॉपिक्स. करेक्ट. 11 से 20th सितंबर जुलाई के मंथली टॉपिक्स सेम 5 टॉपिक्स पर डे 50 टॉपिक्स इन 10 डेज. 21st से 30th तक जून मंथली टॉपिक्स 50 टॉपिक्स इन दीज डेज. आई नो ये बहुत ओवरवेलमिंग लगता है बच्चों, बट अभी ये करना पड़ेगा. और तुम्हें रैंडमली कोई पढ़ने को नहीं बोल रहा है, प्रॉपर सही टॉपिक्स पढ़ने को बोल रहा है, विच वी नो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अक्टूबर में सेम फर्स्ट 10 डेज मई कवर हो जाएगा, नेक्स्ट 10 डेज अप्रैल कवर हो जाएगा, एंड लास्ट 10 days of October, March will be covered. Now, when you're entering November, which is the last month before your exam, you are only left with 2 months. Only with 2 months, जो उतने ज्यादा important भी नहीं है, to be honest. मतलब है, but उसके वही topics important हैं जो limited हैं. ठीक है? So first 10 days February, second 10 days January, and now from 21st to 30th November, revision, practice, take marathon quizzes. We will be doing these marathon quizzes for all of you. Marathon classes, quiz sessions, revisions. That's it, bachcho. Okay? Now, everyone, I just wanted to tell you, when you are dividing these topics now, you can go with 2 approaches. Now, listen very carefully. मैं इसको slide पे डालना भूल गई हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? You can go with 2 approaches. One approach can be simply just using the list as it is. देख अभी मैंने दिखाया था ना, उसमें बजट भी था, उसमें कुंभ भी था, उसमें साइंस एंड टेक भी था, नेशनल न्यूज भी थी, इंटरनेशनल न्यूज भी थी, एवरीथिंग वाज देयर. ठीक है. सो ईदर यू कैन जस्ट सिंपली गो मंथ बाय मंथ, or you can go theme by theme. What are the themes? Can anybody tell me in the chat box? हमने पहले के सेशंस में कुछ themes डिस्कस की थी, like national something something, international news with international conflict, ठीक है, international organizations. याद है किसी को? तुम लोग कुछ themes? अच्छा अभी chat disabled है, so I'll tell you. I hope you remember बच्चों. स्पोर्ट्स होता है, साइंस एंड टेक होता है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी होता है, न्यू एक्ट्स एंड बिल्स होता है, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया with international bodies, United Nations and its initiatives, the various important international organizations. I hope अब तक ये तो पता होगा कि इस टाइप के थीम्स पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स में सारी कैटेगरीज आ गई, स्पोर्ट्स हो गई जिसमें फीफा है, ओलंपिक्स है. I hope you all understand the themes. So either you can go month wise कि भाई जो भी मंथली में रैंडम टॉपिक्स हैं उनको भी आप कर लो, ठीक है, और you can divide, लिस्ट लो, पीडीएफ का प्रिंट आउट लो, एंड जस्ट डिवाइड देम इनटू थीम्स. दैट सबसे पहले आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस और ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल थीम, like all the exercises that have happened, all the defense meetups that have happened, all the international conflicts that have happened. First I will cover that. Then I will go ahead and I will go and read policies and bills that were in news. तो आप पहले फिर वो कर लोगे. Second, you can go and read about science and tech, निसार सैटेलाइट है, चाहे XGM4 है, कुछ भी है, I will read that. Then I will go ahead and read sports, FIFA है, Olympics है, Paralympics है, I will read that. Understanding बच्चों? Either you can do that approach, that जो भी topics है उनको चुपचाप कर लो, or you can yourself divide the topics in themes. Like if I were you, I would have gone with a theme-wise strategy, because at least I would have even segregated topics which are of more important themes. तुम्हें पता है हर साल क्लैट किसी बिल से, किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से क्वेश्चन पूछता है. तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है फ्रॉम वन इंटरनेशनल टॉपिक, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है फ्रॉम साइंस एंड टेक, फ्रॉम डिजिटल डेटा. So you can go theme-wise also. Okay, बच्चों, I hope it will help you a lot. Okay.
And the last 5 days of December, just revision and MCQs. एक दिन का गैप ले लेना एग्जाम से पहले 6 दिसंबर का, that's it. ठीक है. Now, how to remember facts, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ. रट्टा मार भी लोगे, कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा एग्जाम में. ऐसे ही 2014 2015 में कंफ्यूज होगे. अगर किसी निमोनिक से, किसी कहानी से, किसी लॉजिक से if you will try to learn it, you will be able to remember. And for this बच्चों, the classes help you so much. I really hope that some students from our already existing GK batch are there in this. Yesterday na bachcho, we had a class on legal CA jahan pe I was teaching about the 50 years completion of national emergency. ठीक है. So I told them, bachcho, do you remember how we learned the years of 44th amendment? Can anybody who was there from last class, what is the year of 44th constitutional amendment? Can you tell me? It is bachcho 1978. Yes, Nikita, you are correct. And how I told them to remember this, 44th, 4 plus 4 is 8. So it is 1978. Very good. So all those who were there in previous class, कल की class में, can you tell me बच्चों 42nd amendment का year कौन सा था? 42nd amendment. Because 4 plus 2 is 6. Because इसमें बहुत confusion होता है, तो it will be 1976. All right. So this is what I'm telling, but this was a very small thing that I helped the students with, but I can guarantee that if this comes in the exam, they will not get confused. ठीक है? So this is what I'm telling बच्चों, कि to remember the facts. ठीक है? जैसे when the Shimla agreement was signed, ठीक है, Zulfikar Ali Bhutto was there as the prime minister of this Pakistan. So we learned it with Alia Bhatt. ठीक है? And I know it's a very weird thing to listen to it now, but when we were learning it in the class, still, the students have not forgotten, and I can tell you they will not forget in the exam as well. This is how, your classes help you a lot. Okay. So now, what's the hidden secret, bachcho? Okay. Let's try something. How many of you remember things that you read about the Nisar satellite? Kitni cheezein yaad hain aap? Now you remember. Abhi kyunki kitna time hua hai usko padhe hue, tumhe yaad hai. But I have to tell you, bachcho, there were so many facts that were there over there. Okay. Now, when this question comes in exam, it will be already many days till you will have read this. ठीक है? Practice आपने अलग से कोई करी नहीं है. आपने बस एक passage पढ़ा, एक information पढ़ा. And there is a good chance when in the exam, in the pressure of the exam, a question comes. ठीक है? You might forget some things. L और S में उस वक्त ऐसा solid confusion हो सकता है. And I'm telling you. ठीक है? So many things, even with the full form of Nisar, so many things. ठीक है, वो कितने frequency की है, ठीक है, all of these things, very confusing. Okay, but let's try something over here. ठीक है, when I talked about the practice questions, now tell me the answer, बच्चों. When was the first International Yoga Day observed? I hope that nobody gets a wrong answer now, whether it was 2014 or 2015. Exactly, बच्चों. ठीक है, it was 2015. ठीक है. Now, for all those who are getting the wrong answer now, I'm pretty sure you did not pay attention while we were solving this MCQ back then. ठीक है. So, अब मुझे एक बात honestly बताना बच्चों, honestly बताना. Since we have compared two pieces of information, देखो difference क्या होता है. When you are learning Sri Harikota, ठीक है, you are only learning Sri Harikota. You are not comparing it with any other information जो exam में होगी. जो होगी, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेंगे. बट व्हेन यू आर सॉल्विंग एन एमसीक्यू, a particular multiple choice question from a topic, you are comparing it with the closest option available and still able to learn the right one, even though पहले आप गलती कर रहे हो. ठीक है, मुझे ऑनेस्टली बताना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है, will you get confused between 2014 or 15, or straight away you will know the answer that 2015 was the answer? इस पे तो बेटा मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, या मैं कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं गलती ऑलरेडी कर चुका हूं. राइट, ठीक है. मूविंग अहेड, ये बताओ मुझे, ये तो ऑलमोस्ट बहुतों को याद था, बट सब कुछ अगर तुम छोड़ो, सब छोड़ दो, सारी इंफॉर्मेशन छोड़ो. नाउ टेल मी, सो डू यू थिंक बच्चों, अगर ये इसके आसपास का भी क्वेश्चन पूछते, वन अर्थ, वन सन एंड वन हेल्थ, तुम बताओ, तुम अब कंफ्यूज हो गए, या तुम्हें अब क्लियर पता होगा कि भाई ये गलती मैं नहीं करूंगा. आई रिमेंबर इट इज वन अर्थ एंड वन हेल्थ, बिकॉज वी आर लिंकिंग पर्सनल हेल्थ ऑफ द पीपल विद द हेल्थ ऑफ द एंटायर प्लेनेट. आई रेड इट इन द एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी क्लियरली. ठीक है, सुपर बच्चों. अगला क्वेश्चन देखो, 21 जून को ही क्यों चूज किया था? फुल मून था, पीएम मोदी का बर्थडे है, यूएन फाउंडिंग एनिवर्सरी है, या समर सॉलिस्टिस है? रिमेंबर बच्चों, समर सॉलिस्टिस का रीजन हमने क्यों चूज किया था? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड डे फॉर योर स्पिरिचुअल हीलिंग. वेरी गुड श्री, वेरी गुड. SHR, I don't know your name, it is the longest. See, it is not just that you remembered the answer, you remember that it is also the longest day of the whole year. It is connected with the spiritual healing of a person, and no matter what, you will never get this answer wrong. I can guarantee you this. Okay,
Let's see the last question. Which country was the one which co-sponsored the UN one? Is it just US, China or 177? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, डू यू रिमेम्बर 177 ऑल्सो? अगर यहाँ पे 178 भी आ जाएगा ना तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, बट इफ यू वुड हैव रेड इट इन जस्ट अ पैराग्राफ ना, आई एम गारंटीइंग यू दिस, कभी ना कभी, क्योंकि बच्चों अभी क्या होता है ना, अभी तुम टिक 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 घड़ी की टिक टिक में नहीं हो, तुम्हें वो प्रेशर नहीं है। जब एग्जाम में ना 176, 178, 177 कौन सा था, you will get confused, just how students get confused between 1976, 78 or 77. ठीक है, but now since you saw it in the option, you might have marked it wrongly, but you saw it in the explanation, twice you read it 177. मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ बच्चों, दिस इज समथिंग विच आई एम शेयरिंग विच वॉज वेरी पर्सनल टू मी। मैं ना कभी भी नोट्स और इन सबसे पढ़ाई करती ही नहीं थी। आई यूज टू रीड समथिंग एंड आस्क माई सेल्फ एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस टाइम, हु डिड दिस, वट वॉज द आर्टिकल, वट वॉज द सेक्शन। अनलेस आई एम एबल टू आंसर दैट लाइक दिस, आई एम नॉट रेडी फॉर द एग्जाम। और मैं वो कंटेंट पढ़ के कर ही नहीं सकती। आई कांट डू इट। Even if I do it, I have to ask myself questions and I have to make sure that I'm able to answer those questions. Now you see बच्चों, reading is also very very important. But the only thing is that अगर मैं सिर्फ तुम्हें as a fact बता देती ना कि 177 nations हैं, 21st जून है, तुम 21st जून और 22nd जून में ही कंफ्यूज हो जाते। तुम you know 2014 और 15 में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। That is what the trick of the toppers बच्चों। तभी practice is the real king over here, okay? Now that's the thing. How much do you remember about the satellite? अभी तो आज मैंने तुम्हें इतनी बार बोल दिया, श्रीहरिकोटा, निसार सैटेलाइट है, एल और एस बैंड, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। बट जब तुम ये खुद से पढ़ते हो ना बच्चे, तब एट द एग्जाम डे हम देखेंगे कि तुम्हें कितने फैक्ट्स कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तुम। एंड आई विल टेल यू बच्चों, दैट्स द वर्स्ट फीलिंग व्हेन यू नो आई रेड इट एंड आई कांट रिमेम्बर इट। और जब घर आके आंसर की चेक करते हो और इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम अपने ऊपर कि मैंने क्यों रिवाइज नहीं किया होगा, मैंने क्यों प्रैक्टिस नहीं किया होगा, हाउ कुड आई लूज अ मार्क जस्ट बिकॉज ऑफ 2014 और 15 का कंफ्यूजन। गेटिंग बच्चों? सो दिस वी डोंट हैव टू डू। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, तुम 2 टॉपिक 4 टॉपिक कम पढ़ के जाओगे ना, मुझे चलेगा, लेकिन तुम जो पढ़ के जा रहे हो ना उसका फायदा क्या है जब तक तुम्हें वो याद ही नहीं है, जब तक तुम उसे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। ठीक है? सो दैट इज व्हाई बच्चों I have to tell you, and I very, very, very importantly have to tell you, this batch, which I am telling to you, the GK Rapid Revision batch, is all but practice. All but practice. मेहनत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कोई घुट्टी नहीं दे सकती ऐसी जो मैं तुम्हें क्लास में बता दूं, पढ़ा दूं और तुम्हें जिंदगी जहान की चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि आई ट्राई माई बेस्ट, द टीचर्स, मतलब सुहानी मैम इज देयर, शी ऑल्सो ट्राइज द बेस्ट कि आपको चीजें याद हो जाए, आपको हम सब चीज दें, नोट्स भी दें, पीडीएफ्स भी दें, सब कुछ दें, but you have to practice. Now how you practice बच्चों, you need a pool of thousands of questions on every topic। उसका static portion हो, current portion हो, उसका आसपास के topics हो। ठीक है? That is, for example, when was the first yoga day celebrated? ये कोई न्यूज में नहीं है आजकल। It was just a news that International Yoga Day was there on 21st June. That's it. The theme was this. But CLAT will go one step down and will ask you maybe the first yoga day was celebrated on which date or year, right? This is what the batch or practice questions do for you. Okay, very good, Mona. Now you remember, you will always remember. I will remember it forever as well. 21st June 2015. Okay, so this batch, bachcho, is, I have told you what will you get in the batch. ठीक है? I will show you what you will get in the batch. जो बच्चों के जो उनके feedback हैं, all of these things you can go through. ठीक है? I will just quickly show you that what you get in the batch. Okay? So for all those, हाँ, अभी there will be a link which will be shared with all of you बच्चों after I have told you about the batch and everything. You just have to go ahead. उस लिंक से आपको 2 चीजों का बेनिफिट मिलेगा। फर्स्टली, यू विल गेट द एक्सेस टू अ प्रोटोटाइप ऑफ द होल जीके बैच। देखो बच्चों, ये हमारा जीके रैपिड रिवीजन बैच है। ठीक है? उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर मंथ के, अभी तक के। ठीक है? क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लीगल सीए की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, स्टैटिक की क्लासेस मिलेंगी, स्टैटिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है? That is absolutely free for all of those who are staying till the end. Okay, so right about this I'll tell you the like what is there in the batch and everything, what is the price and everything. उसके बाद आप उस लिंक पे जाके just register, you will automatically get the access to this demo batch. ये तो देखो, ये मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ बेटा, ये फुल बैच है। ठीक है? बट इसका प्रोटोटाइप आपको एक मिल जाएगा जो मिनी बैच है, इसका फ्री में। ठीक है? और जब आपकी मेल आईडी हमें मिल जाएगी, we will email you the list of important topics on your email. ठीक है? And I will not share that on the group. Okay? So बच्चों, this is how your batch looks like. ठीक है?
जैसे कि अब यहाँ पे तुम्हारे टॉपिक्स हैं, देखो जैसे जनवरी के टॉपिक्स हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसी तरीके से देखो सारे टॉपिक्स हैं। बाकी देखो जो अपकमिंग मंथ्स हैं इनके टॉपिक्स तो यू विल गेट, ठीक है। सो अगस्त के फॉर एग्जाम्पल यू हैव, जुलाई के टॉपिक्स हम खोल लेते हैं, ठीक है। सी एक्सियम 4 के क्वेश्चंस आते हैं, 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी जून में, क्योंकि 25 जून को था, तो वी हैव कवर्ड इट ओवर हियर, ठीक है। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ मीट, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। देन वी हैव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर, इलेक्टोरल रोल्स बिहार का, यू रिमेंबर Bihar was going all digital with the elections and everything, ठीक है। Elon Musk launches America Party, ठीक है। What is it? India ranks 4th most equal country in the world, very very important। Gini index, Gini coefficient होता है बच्चों, बहुत important है। Russia becomes first country to officially recognize Taliban government, what a news, very important, ठीक है। क्वाड के बारे में है, इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा, सो इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फैक्ट्स पूछ लेते हैं छोटे छोटे से, यू नेवर नो। वो आपसे जलियांवाला बाग का जैसे आया था, आपसे गोल्डन टेम्पल की हिस्ट्री पूछ लें और वहां से वो इस क्वेश्चन को भी ले आए, ठीक है। यू नेवर नो, ठीक है। देन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू आर सीइंग बच्चों, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यूनेस्को का टॉपिक्स है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इस तरह के टॉपिक्स देखो, फॉर एग्जाम्पल चलो एक्सियम 4 का देख लेते हैं। सो यू क्लिक ऑन दिस, व्हाट यू गेट इज यू गेट अ कंप्लीट पैसेज टू रीड ऑल्सो। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज है बच्चों, ठीक है। यू गेट अ कंप्लीट पैसेज टू रीड अबाउट एक्सियम, ठीक है। एंड यू ऑल्सो गेट 20 corresponding topics, ठीक है। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड एन एस्ट्रोनॉट ऑन अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिशन टू ISS फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 4 decades, ठीक है। सो आई थिंक I think this is the answer, India, Poland and Hungary, ठीक है। एंड इवन आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आई थिंक दिस इज द आंसर। तुम लोग चलो मेरे साथ सॉल्व करो बच्चों, करोगे मेरे साथ सॉल्व, ठीक है। यू कैन डाउनलोड बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी शेयरिंग द पीडीएफ्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो। ये मैंने एक्चुअली इस मंथ से ही सोचा है कि मैं इस पोर्टल के साथ साथ आपको इनकी लाइक पीडीएफ दे दिया करेंगे, यू कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड देन यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। सो ओके, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन दिस क्विज विद मी बच्चों? यू कैन आंसर। चलो लेट्स सी कि तुम लोग के कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। बी, मुझे भी लगता है इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, ये 3 कंट्रीज थी। हु सर्व्ड एज द पायलट फॉर द एक्सियम 4 मिशन? कौन है इसमें? पेगी विटसन, स्वॉलोज उज़नान्स्की, विंज़वस्की, आई डोंट नो व्हाट डी। अच्छा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, द पायलट, आई थिंक यस, बिकॉज पेगी विटसन वाज द कैप्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। Then Axiom 4 crew launched aboard a SpaceX Dragon spacecraft. Which rocket was used to propel the spacecraft into orbit? You guys are saying C. Mostly are saying C. Falcon 9. So I'm going to mark C only. ठीक है? According to the passage, who was the first Indian to go to space and on which spacecraft? The first Indian to go on space. हम Indian International Space Station की बात नहीं करें. हाँ, I think it has to be Rakesh Sharma. ठीक है? And the name was Soyuz T-11. The next question is, what is the name of India's indigenous human space flight program, which the Axiom 4 mission is helping to prepare for? I think option C. I think I also. मैंने एक्चुअली ना इसके बारे में अपने हमारा जो ग्रुप है बच्चों, एक जीके ग्रुप ना, उसमें मैंने क्विज ली भी थी, तो मुझे भी ये सारी चीजें काफी याद है। The passage mentions the group captain Shubhanshu Shukla performed experiments on green gram, moong dal, and fenugreek, which is methi seeds. What was the primary objective of these experiments? So your options are to test their genetic modification in space, to understand how microgravity affects their germination and potential sustainable. Mostly you're saying B. Chalo, I'm marking B with you. Okay. Next, what is the name of the Chinese space station mentioned in the passage? Batao bhai. Mir, Tiangong, Salyut or Skylab? I think नाम से you can understand Tiangong Chinese space station है, ठीक है। India's own planned modular space station is named as what? Vayu Antariksh Station, Bharatiya Antariksh Station, ISRO Antariksh Station or Swadeshi? Okay, you are mostly saying B, so I'm marking I don't know the answer. Bharatiya Antariksh, ठीक है। Axiom 4 mission crew launched from which space center? बताओ भाई। सतीश धवन, बाइकनोर, कॉस्मोडोर, कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान, कैनेडी, और ये तो बहुत आई थिंक बहुत ही इजी आंसर है ये वाला, कैनेडी। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड फॉरगेट दैट, ठीक है। कैनेडी है यूएसए का। The space states that the passage states that Shubhanshu Shukla is the first Indian to visit the International Space Station. The fact highlights which aspect of the mission's significance? ये last question है जो भी हम करेंगे। That it is symbolic journey with no practical application. It marks the first time an Indian astronaut has been part of the commercial space mission. It represents a new milestone in India's human space exploration, distinct from previous missions. It shows that India's space program is now entirely independent of other nations. Mostly you're saying C, we'll mark the C. ठीक है। अब इसी तरीके के बच्चों बहुत क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टॉपिक से, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगी, आई जस्ट सबमिट माय आंसर, ठीक है। लेट्स सी भाई हमारे कितने मार्क्स आए, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर बी था हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट में बच्चों इसको एनालाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो, सो बी वॉज आर करेक्ट आंसर, वी गॉट द आंसर। yes, B is correct. There seems to be some issue. Okay, let's just move ahead with other questions जो हमने मार्क किए हैं, देखते हैं। ये करेक्ट है हमारा, कैप्टन शुभांशु शुक्ला बच्चों इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क किया है, ठीक है। देन द सेकंड पैराग्राफ मेंशन स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9, ये हमने करेक्ट दिया है। राकेश शर्मा सोयूज T11, वेरी गुड बच्चों, एक्चुअली गगनयान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोग्रेविटी अफेक्ट्स देयर जर्मिनेशन, ऑप्शन 2 वाज करेक्ट आंसर। तयांगोंग जो स्पेस स्टेशन था चाइना का जो मेंशन हुआ है उसमें, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इवन आई डोंट नो दिस, डिडंट नो दिस आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। कैनेडी स्पेस सेंटर जहां से लॉन्च किया गया है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू माइलस्टोन इन इंडियाज ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे भी बच्चों कुछ ग्लिच हुआ होगा, अदरवाइज दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये तो आपको मिलेंगे आपके ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस व्हाट मोर डू यू गेट इन दिस बैच, सी दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग इट becomes to solve the questions, ठीक है। when you have MCQ, so आपको इनको डाउनलोड करके आप इनको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। now if you want that you want to take the classes, अब यहाँ पे जो क्लासेस है बच्चों इनकी सबकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, सारी क्लासेस लाइव होती हैं, सब क्लासेस का PDF भी आपको मिलता है। ये है भैया बेटा क्विज क्लासेस, तो व्हाट वी डू इज वी आल्सो हैव क्विज क्लासेस फॉर योर वीकली रिविजन्स, ओके। लेट्स सी जुलाई की जो क्लासेस हैं ये आपकी है, जैसे जुलाई की वीकली CA क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइव अटेंड करोगे, इस क्लास को जूम पे होती है, एंड यू ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द वेरी सेम क्लास। ये आपकी नॉर्मल वीकली CA की क्लासेस हैं, ठीक है। लेट मी ऑल्सो शो यू बच्चों दैट वी हैव लीगल CA क्लासेस ऑल्सो जो लाइव होती हैं, जो मैं खुद पढ़ाती हूँ, जिनकी भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, ठीक है। ऑल इन ऑल बच्चों, ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दैट दिस बैच इज something that can help you a lot, and it can make your prep more interesting and easier. You will have the support of the classes, you will have the support of study material, you will have questions to practice, ठीक है। इनके अलावा आपको और सारी चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। Okay, Adla, I will have to look into this. Legal reasoning classes already they are going on YouTube, so you can go ahead with that, ठीक है। And yes, Shreya, I'm actually planning from this very month itself that all these questions we will give you a PDF so that you can just print out and you can practice offline mode में आप practice कर सकते हो with answers and explanations, ठीक है। So from this month of previous months also हम आपको सारा का PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ बच्चों व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैच? दिस बैच इज फॉर 2,999 रुपीज, ठीक है, with live classes, with the access to the dashboard, with practice questions and everything, ठीक है। 2,999 is the fees of this batch, okay। Now if you want to buy this batch, I will request my team to share the link, okay, with all of you. 3 महीने बचे हैं बच्चों, ठीक है। This will be कहीं भी आप अटक रहे हो, कुछ भी आपको हो रहा है, you have classes का support, you have practice questions, you have magazines, we are reading the magazines in the classes, everything you can do, ठीक है। Alright बच्चों, just let's take a short break and I hope तुमने GK बैच के बारे में अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। Now this batch बच्चों is a wonderful batch. You can see the feedback of the already studying students जो यहाँ पे already पढ़ रहे हैं इस बैच में। And by the way, I am coming up with special backlog marathon classes जो जनवरी से लेके अब तक जितने मंथ्स मिस हुए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं खुद करंट अफेयर्स के क्लासेस पढ़ाऊंगी टू कवर योर बैकलॉग। सो यू कैन जॉइन दिस बैच, इट इज सुपर अफोर्डेबल। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन टेक आउट मोर डिटेल्स या फिर स्क्रीन पे आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं आप इनको कॉल या मैसेज कर सकते हो टू नो मोर अबाउट द बैच। अब वापस से वीडियो देख लो। But yeah, you just please till then Ashwin, please share the link where they have to register for all the students बच्चों। A lot of you actually have stayed back. So register it, ठीक है, उसको आप करो register and you will get the access to a demo dashboard, ठीक है, जहाँ पे आपको मिनी बैच मिल जाएगा free of cost. And apart from that, you will also, we'll get your mail IDs to share the list. Okay, give me a moment. ठीक है, so this बच्चों is what you will get in the batch, okay? So as I said, your monthly 1,000 questions like this on your portal, 500 plus questions that you will get from your monthly magazines, okay? Weekly CA classes that you will have, we have 2 to 3 classes every week. You have legal current affairs classes every month. Now we have 3 to 4 to 5 classes every, अब उसको हम बढ़ाएंगे वैसे भी because a lot of syllabus has to be covered. You will be a participant of our premium WhatsApp group जहाँ पे आप questions पूछ सकते हो, doubts पूछ सकते हो, all the things, classes links are shared over there, okay? We are coming up like now, actually we'll be having monthly mentorship sessions from CLAT toppers, जो भी आपके questions है आप पूछ सकते हो।
11th monthly CA GK magazines, 11th legal current affairs magazines, and all of these things you will get in the batch बच्चों, ठीक है? So ये सारी चीजें हैं और सारी classes live होती हैं, सारी की सारी, और सबकी recordings आपको मिल जाएंगी. You will get recordings of every class on your portal in less than 24 hours, okay? As I have shown you, like this, you know, your batch will look like. सारे topics आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है? 50+ topics आपको मिलेंगे for every single month, ठीक है? I take the legal CA classes, bachcho, and Suhani ma'am, you know, she takes your weekly current affairs classes for the general current affairs. Now, the marathon classes and the marathon quizzes will be taken by me, myself. I'll be like coming up and doing this, okay? These are the mentors which will be coming up to guide you all, okay? And ये बच्चों आप देख सकते हो. लक्ष्य, by the way, I think previous session में भी I had Lakshya also. Lakshya right now बच्चों is in NLU Odisha. He was a student of our previous year's GK batch, okay? And he pretty much sucked at it. I'm sorry, but he was not good at GK at all. This batch helped him a lot. If you want, you can just go ahead and play this testimonial. आप लोग देख लेना, ठीक है? ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं. These are the feedbacks of students जो अभी भी होंगे इस सेशन में, ठीक है? तो ये कोई like I have not written down these feedback. I requested the students and they have shared their feedback with us, ठीक है? So ये बच्चों के feedback हैं. You can read them that how do they find this batch? Is it helpful or not for them? And 2999 बच्चों is a steal deal. I am telling you, ठीक है? It's a steal deal, okay? With this, Ashwin, can you please just share the link for registration? बच्चों, this link will be shared with you all. And can you please help them how to buy, where to click the button and all those things? Okay, sure. So, and बच्चों, the classes, you know, they will be in English only, so you don't have to worry about it. See, अगर anytime if the teacher is speaking anything in Hindi also, now I am telling you, be assured you're not missing out anything, okay? Everything is being said and repeated in English as well. Now, for all those who want to buy this, just go on this link which has been shared with you already, ठीक है? यहाँ पे आप ये देख रहे हो. You just have to click on book your seat now, okay? As soon as you click on it, you get this page. What you do is, बच्चों, you go ahead, you put in your Gmail ID. Please put in a valid Gmail ID जिसपे आपको notification आते हैं, your name, your last name, and a phone number that you use, okay? Then you just have to go ahead, okay? देखो, ये एक बेसिक बैच है जो सिर्फ 999 का है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, नो क्लासेस. बट आई डोंट रियली सजेस्ट दिस टू यू. जस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, गो अहेड विद द 2999 बैच, ओके? गो अहेड विद दिस बच्चों. By the way, if you want to have, you want to add maths batch to it, if you're facing problem in maths, you can just add it over here, or you can add the Swayam batch, जिसमें पूरे CLAT की classes हैं, recorded classes in this, you can add and you can just click over here. But let's just say you're just going with the GK batch right now. Then just click on get access and you will be taken ahead to make the payment of 2999. That's it. It's a one-time payment, बच्चों, ये कोई monthly payment नहीं है, ठीक है? Now बस यहाँ पे they are saying कि यहाँ पे as you see now Razorpay is open, I can scan or however I will just go ahead and make the payment, ठीक है? So this is how you do it and it's a one-time payment. You don't have to pay 2999 every month. ये एक ही बार pay करोगे and CLAT exam तक आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है? This is how you will get everything, okay? Now I think I've pretty much told you everything, बच्चों. This is the batch all about it. मैं अगर backlog की बात करूँ, just go with the topic list that I will be sharing. Segregate them month wise already हैं. चाहो तो theme wise segregate कर लेना. And start with 5 topics a day. मैं ये slides अभी आपके साथ share कर दूंगी so that you have the plan at your hand and you can go ahead with it. Rest, if you want to proceed with my assistance and guidance for your GK backlog, just go ahead with the batch, बच्चों. Okay, it will really be a game changer for you. Okay, make sure बच्चों all of you are filling this registration form. एक तो आपको इस batch का mini version मिल जाएगा free of cost, and we will get your mail IDs to give you the topic list of all the months. ठीक है? So make sure to register. I'm still here right now. Till then, I will take up the queries, whatever queries you have, बच्चों, ठीक है? And I will just now stop the recording. Okay? Alright बच्चों, if you've reached till here, congratulations, you have done a great job today. आसान नहीं होता है इतनी लेंदी वीडियोस को देखना और उनको एब्जॉर्ब करना, but I'm very proud of all of you. I hope that you got some clarity and it was helpful for you all. And at last, just reminding you all to not forget to join the WhatsApp group. It is going to be so important for your CLAT 2026, or even if you're preparing for next year CLAT as well. Just join the group. It's absolutely free. And do not forget to check out the GK patch and important topic list also. सबका link आपको description में मिल जाएगा. Just go ahead, take advantage of it. I'll see you in the next video very soon. Bye बच्चों.